So most of the students they know 38 question from chemistry part, 38 question from statistics part, 28 question from pharmacology part, 10 question from pharmacognosy part, and 11 question from other subject. So out of that 38 question from statistics part, so that will be divided into every subject. Like few questions will be there from pharmaceutical engineering, few questions will be from physical pharmacy, few questions will be from dispensing, few questions will be from industrial pharmacy, biopharmaceutics. Like okay, so from industrial pharmacy you can expect at least 10 to 15 question. Okay, from pharmaceutical engineering only 3 to 4 question. Then from physical pharmacy 4 to 6 question, or you can say 5 questions. And from biopharmaceutics you can expect at least 4 or 5 questions. So 38 questions are divided. Okay, so from pharmaceutical engineering, as I have told you, only 3 or 4 questions, and they are also divided into different chapters because you have a lot of chapters in the pharmaceutical engineering. So okay, so out of that we have only seen your flow of fluid. For another batch, I have already completed size reduction, size suppression, drying, evaporation, distillation, crystallization. So for your batch, I am going to take that again. Don't worry. So out of that also, in the from the flow of fluid, you can expect only 1 or 2 questions, and from transportation of fluid also you can expect 1 question. What do you mean by transportation of fluid? Transportation of fluid means movement of fluid from one place to another place, or you can say it is nothing but the conveying of your fluid from one point to another point, right? Now for that conveying you need a different types of pumps, you need a different types of pipeline, you need a different types of valves to control the flow rate, you need a different type of pumps. Okay, so in this chapter we are going to see that only. So different type of valves, different type of pumps, that is the only thing in this chapter. Now why you have to study this transportation of fluid? Suppose you have pharmaceutical industry, and your production is there, you are manufacturing the liquid orals, you are manufacturing the suspension, okay, solution or suspension. So the manufacturing unit or production unit is on first floor, and packing unit should be at ground floor because of that gravity. So there will be ease of filling of that syrup in the bottles, right? So for that also you need to understand the transportation of fluid. For example, if you are preparing the syrup is little bit viscous, it is a little bit viscous syrup is a right down 66.67% of sucrose. सिरप में कितना होता है सुक्रोज? 66.67% of sucrose. क्वेश्चन आ चुका है उसका. So syrup is a little bit viscous. So you have to transport, you have to convey, you have to move that syrup from preparation vessel to the bottle. So for that you need to transport mechanism. For that you need to pump out that syrup from vessel to the packing machine. So for that you need a pumps, right? Now you have to control the flow rate. Suppose for example you are carrying one reaction, so at that time you need to control the amount of reactant, you need to control the quantity of reactant, you have to quantify that. So for that purpose you need to control the flow. Okay, control the flow. There are a lot of application of transportation of fluid in the pharmaceutical industry. For example, in case of bulk drugs, in case of liquid orals, in case of suspension, emulsion, okay, in case of semi solids. So they are nothing but the application, so you can read application from books. Otherwise I will explain you at the end of this chapter because they are not important. Now what is mean by valve? So valves are nothing but they are the devices, they are the tools for controlling the flow rate, for controlling the flow rate, to control the flow rate, okay, in the pipeline. To control the flow rate in the pipeline, they are nothing but the valve. So they are the devices, they are the tools, they are the means through which you can control the rate of flow of any fluid, right? There are different types of valve, they are used in the industry. So you should know what is meant by different type of, what are the different types of valves. So first one is nothing but the plug cock valve, okay. Then global, then there is a globe valve, then there is a gate valve, then there is a diaphragm valve, also quick opening valve, QO valve, quick opening valve, and then there is a last type check valve.
These are the different types of valves. They control the flow rate. Now they are designing, their construction, they are working. Okay, so there is no need to read construction, working, designing in the detail, but at least superficially you should know how plug cock valve will look. So what is the mechanism? How it will control the flow? What is the mechanism of globe valve? What is the mechanism of gate valve? Diaphragm wall, quick opening wall, check wall. So in the short, at least superficially, you should know these things. And most of the time, they used to ask same thing. So which wall is mostly used for the transportation? Which wall is suitable for the viscous? Which wall will have a central opening like that? Such kind of question they used to ask. So initially, we'll see the little bit information about that, and then we'll go further for the detailed information. So superficial information, type of wall, plug cock wall. In this wall, okay, in the pipeline, so these walls are placed in between the pipeline. These walls are placed in between pipeline. जो भी वॉल होता है वो कहाँ पे होता है? पाइपलाइन के बीच में होता है. आपने देखो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो पानी आता है तो सुबह सुबह वो उनका जो कर्मचारी होता है वो जाके वो ओपन कर देता है वॉल, तब जाके आपको पानी आता है. सो valve will control the flow of fluid. Okay, water is also fluid. So there are different type of plug cock valve means, so you just have to, the valve is in between the pipeline. Okay, so we'll see the designing later on. So it consists of a body casting. इसमें क्या होता है? एक बॉडी होता है. Okay? It consists of a body casting in which conical plug is fitted. Conical plug is fitted. For example, diagram of next slide में देखें. Okay, so it consists of a body casting which has a conical plug which is fitted in the body casting. So plug cock valve. Plug cock valve मतलब cock जो होता है वो. Okay, so it consists of a body casting in which plug, okay, in which conical plug which is fitted with the opening. Opening is like cylindrical bore. तो cylindrical opening होगा उसका, उसमें वो कहाँ पे फिटे? एक बॉडी में फिटे, केसिन में फिटे, एक सिलेंडर में फिटे. So it consists of a body in which conical plug is fitted with the opening. It has opening. Some valve will have cylindrical opening like that. So cylindrical bore. So it is used for handling of compressed air. So plug cock valve is used to handle the compressed air. Then next one is a globe valve. सेकंड में आता है आपका ग्लोब वॉल्व. सो इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लोबल बॉडी. इसमें ग्लोबल बॉडी होता है ग्लोबल शेप का. ओके, सो ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया का नहीं, ग्लोबल शेप का विद द हॉरिजॉन्टल इंटरनल पार्टीशन. इसमें एक इंटरनल पार्टीशन होगा एंड विद द सर्कुलर ओपनिंग. वो पार्टीशन में क्या होगा? एक सर्कुलर ओपनिंग होगा. राइट. सो ग्लोब वॉल्व इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लोबल बॉडी with horizontal internal partition which will have a circular opening used. Okay, so globe wall is used only when diameter of pipe or inside diameter of pipe is not more than 50 mm. Then third one आता है आपका gate valve. So it is a wedge shaped inclined, it is fitted inclined in seat of gate. It is most commonly used valve, gate valve. Then next आता है आपका diaphragm valve. So diaphragm is a principal barrier. These walls are made up of a fabric reinforced natural rubber. जो diaphragm होता है वो either it is of natural rubber or it is of synthetic rubber and suitable for fluid containing suspended solid. Then next होता है quick opening valve. It is mostly used for short lines. क्योंकि quick opening valve short line के लिए यूज करना है, क्योंकि जो लॉन्ग लाइन होता है, लॉन्ग पाइपलाइन अगर होगा तो ये क्विक ओपनिंग वॉल्व जो है ना, कभी कभी बिकॉज ऑफ द फोर्स, बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, तो ये जब आप उसको ओपन करेंगे तब आपको एक थोड़ा सा झटका लगता है, शॉक लगता है. सो कैसे होता है वो अपन देखेंगे नेक्स्ट में. देन लास्ट में आता है चेक वॉल्व. सो यूज व्हेन यूनिडायरेक्शनल फ्लो इज डिजायर्ड. एक ही डायरेक्शन में फ्लो आपको है तो चेक वॉल्व यूज कर सकते हैं. सो जस्ट रिमेंबर, valves are the devices, valve are the tools. They control the flow of fluid. They are used to control the flow of fluid. Okay? And these are the types of valve: plug cock valve, globe valve, gate valve, diaphragm valve, quick opening valve, and check valve. Okay? So different valves, they may be made from either iron, cast iron, or brass,
तो जो वाल्व कैसे बनते हैं, वाल्व दे आर मेड अप ऑफ ब्रास और आयरन ब्रॉन्ज, कास्ट आयरन, एंड दे शुड विथस्टैंड विद द हाई प्रेशर। तो प्रेशर के साथ में टिकना चाहिए उसने। वाल्व बैठाया आपने और अपने पंप चालू किया, मोटर चालू किया और वो वाल्व उखड़ गया, क्या फायदा उसका। सो इट शुड विथस्टैंड विद द प्रेशर of flow of fluid, then temperature change, strain from the pipeline, distortion from the sealing surface. So they are the nothing but the ideal qualities of valve. आपके बुक में दिया what are the ideal qualities of valve. Valve का ideal qualities क्या होना है, so एक शॉर्ट में दिया है मैंने. So they should withstand with the pressure, they should withstand with the temperature change, they should cope up with the strain from pipeline. जब पाइपलाइन का जो प्रेशर या स्ट्रेन आ रहा है तो वो भी उन्हें सहन करना चाहिए. डिस्टोर्शन फ्रॉम द सीलिंग सरफेस, distortion from the ceiling surface. With different valve, they are made of brass or iron, bronze, cast iron, etc. etc. This is the material for making a valve. Valve is not made up of plastic. बहुत बार प्लास्टिक का नहीं होता है, अभी भी होता भी है, प्लास्टिक का भी होता है. आपके घर में अगर बोरवेल है तो उसमें अगर प्लास्टिक का भी valve होता है ना. आपके दो टॉकी, एक नीचे वाले के लिए आप बोलते हैं ना नीचे रूम रेंट से दिया है तो उनका वाटर सप्लाई जो है उनका वाल्व जब तक आप ऑन नहीं करेंगे तो उनको वाटर नहीं जाए. सो पहला होता है आपका प्लग कॉक वाल्व, plug cock valve, right? So it has a body, it consists of a body with a fitted conical plug. बॉडी रहेगा इसमें और ऐसा कोनिकल प्लग रहेगा, कोनिकल प्लग रहेगा, उसमें एक सिलेंड्रिकल ओपनिंग रहेगा. ये कहाँ पे रहेगा फिट, एक बॉडी में रहेगा. इट हैज हैविंग ए सिलेंड्रिकल बोर थ्रू व्हिच लिक्विड विल पास. ओके, द पैकिंग मटेरियल यूज्ड अराउंड द स्टीम टू क्लोज इट. मतलब कोई पैकिंग मटेरियल जो है वो प्रॉपरली फिट हो जाए वाल्व एंड उसमें कोई भी ये न रह जाए, कोई भी उसमें कोई भी ओपनिंग न रह जाए, इसलिए पैकिंग मटेरियल यूज करते हैं. पैकिंग मटेरियल जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम रबर होता है या फिर टेफ्लॉन का टेप होता है. सो प्लग कॉक वाल्व, सो इट हैज अ बॉडी व्हिच इज फिटेड विद अ कोनिकल प्लग. डिस्क्रिप्शन याद रखो, डिस्क्रिप्शन पूछ सकते हो. एंड हैविंग सिलिंड्रिकल बोर इनसाइड द प्लग which is through which liquid will pass. Okay, packing material used around the steam to close it. Then it is used for complete opening or complete closing. When there is a complete opening or complete closing is desired, जहाँ पे आपको एक तो चालू करना है या फिर बंद करना है, तो पूरा फ्लो जो है पानी एक तो पूरा फ्लो चालू करना है या फिर पूरा बंद करना है, तो कंट्रोल नहीं करना है, तो पूरा करना है, छोड़ना है या फिर पूरा बंद करना है, उस टाइम के लिए प्लग कॉक वाल्व्स दे आर यूज्ड. इफ यू वांट टू, if there is a complete opening or complete closing is desired, so at that time it is used. Example, it is used for the handling of compressed air. It is used for the handling of compressed air. Then it is not suitable for the steam and water. And again another disadvantage is the plug will come out frequently. Plug जो होता है वो frequently out, मतलब बाहर आ जाता है वो wall से. You can see the construction of plug, plug valve, plug valve. So this is your pipeline. यहाँ से एक पाइप आता है, यहाँ से एक पाइप आएगा. So you can say this is the body. Okay, it is a metal casing or body. You can see body casting. So in which conical plug. This is the conical plug, right? पूरा क्या है conical plug. And in that you have cylindrical opening. इसमें cylindrical opening है. So from there, okay, it is a steam मतलब it can be rotated. Okay, so अगर ये, okay, now it is closed. Now whatever valve you are seeing, it is a closed valve. close है मतलब अभी फ्लो नहीं चल रहा है, because ये close हो चुका है valve. Now when it will be turn, इसको आप turn करोगे, so this cylindrical opening will face this side, at that time there is a passing of liquid through it. Okay, so that is the description for plug clock valve, right? Now second valve is nothing but the globe valve. Globe valve, इसको बोलेंगे globe valve. So globular body with the horizontal internal partition. इसमें क्या है कि globular body रहेगा and horizontally internal partition fitted रहेगा. Fluid will pass through circular opening. Fluid will pass through circular opening. तो जो internal partition है उसमें circular opening रहेगा. So fluid will pass through that.
Now which can be opened or closed by inserting the disc in the opening. Which can be opened or closed by inserting the disc in the opening. Okay? The disc is position. So disc is position मतलब disc कहाँ पे position होता है. So it is positioned on sitting okay seat ring. एक seat ring होता है उसमें वहाँ पे disc position किया जाता है. It can be rotated freely on steam. Can be rotated on freely on the steam. It can be connected for horizontal as well as vertical lines. Okay. This globe valve is inserted or it is installed at the high pressure side connecting a narrow portion disc. जहाँ पे ज़्यादा वो जो पाइपलाइन में जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है तो वहाँ पे ग्लोब वॉल इंसर्ट किया जाता है. I will explain you this again with the help of diagram. So it is used when pipe diameter is less than 50 mm in size. Okay, it prevents the complete drainage. It prevents the complete drainage in the horizontal line. But disadvantage क्या है इसका? Sludge and scale or rust will prevent the opening of wall frequently. इसमें क्या है स्लज डेवलप होता है या फिर क्लॉग होता है या फिर स्केल डेवलप होती है तो बिकॉज ऑफ दैट वो कभी कभी ओपन नहीं होता ग्लोब वॉल. So you can see the structure of globe wall here. So it has a globular body in which okay, so there is a horizontal partition and in this there is a disc. In this there is a disc. So when this disc is it can be easily rotated with the help of steam. तो ये जो उसका हैंडल होता है या स्टीम होता है उसको रोटेट कर सकते हो. When it will be rotated, now it is in a closed position. यहाँ पे भी closed position है. So this is known as a seat for the disc. This is known as a seat for the disc. So when this steam will be rotated, so यहाँ पे जो high pressures होंगे, when it will be rotated, so there will be flow. Okay? Otherwise it will be closed. So it is a globe wall. Globe wall कैसा होगा ऐसा. Now third one is nothing but the gate wall. Third one is nothing but the gate wall. अभी आप बोलेंगे सर लास्ट जो सेशन आपका जो वीडियो है फ्री में उसमें और इसमें क्या फर्क है. ये फर्क है ये जो टेबल्स है वो उसमें नहीं है. एवरीथिंग इज न्यू. गेट वॉल in this gate wall a wedge shaped inclined seat type of gate is there. A wedge shaped inclined seat type gate is most commonly used in this gate wall. It is used okay. Pressure on the gate is controlled. Pressure on the gate is a controlling factor. Controlling factor होगा इसका pressure on the gate. Two types of gate wall are there for rising steam wall and for non-rising steam wall. Two types of gates are available. One is for rising steam wall and another is for non-rising steam wall. मतलब जहाँ पे पानी चढ़ रहा है या फिर फ्लूइड चल रहा है उसके राइजिंग ऊपर जा रहा है तो राइजिंग फिल्म वॉल. नॉन राइजिंग फिल्म वॉल इज फॉर हॉरिजॉन्टल. Now this gate wall is available in the large size. Variety of design. इसका डिजाइन भी बहुत सारा होता है. Variety of capacity में होता है size. It minimizes the differential pressure okay, during the operation and stopping of flow. Now what is the gate wall कैसे होता है? Okay. You can see the construction of gate wall. So this is the body and in that you have this. So it can be raised. यहाँ पे लिफ्ट होता है यहाँ से ऊपर. It can be lifted up. When it is lifted up, it will be open. ये open हो जाएगा and okay, flow will be there. So when it is dipped, so flow will be not there. So that is nothing but the gate wall. Last में होता है आपका diaphragm wall. So diaphragm wall में okay. So gate wall, a wedge shaped inclined seat type of gate is most commonly used. Pressure on gate is the controlling factor. Two types of gate wall are there. Gate rising steam wall and non-rising steam wall. Then next आता है diaphragm walls. Diaphragm wall. Diaphragm क्या है? Physical. It is a flexible physical barrier. Diaphragm क्या है? Flexible physical barrier. Okay. Walls are made of fabric reinforced natural rubber or synthetic rubber with Teflon or fluorocarbon. Teflon or fluorocarbon resin. Special grade of rubber diaphragm coated. Special grade of rubber is there. कौन सा है ना? ये तो fluorocarbon resin. Then
special grade of rubber diaphragm coated with the polytetrafluoroethylene polytetrafluoroethylene or Teflon is available for the repeated steam sterilization in the parental area. So diaphragm wall they are used in the sterilization. Okay, so you have to pass the steam को pass करना है आपको sterilization के लिए pipe से. So at that time diaphragm walls are used. Diaphragm is a flexible barrier होता है. Okay, walls are made from a fabric. वो okay fabric reinforced natural rubber मतलब रबर और फैब्रिक का मिक्सचर होता है उससे बनता है डायफ्राम. फ्लेक्सिबल बैरियर. Okay, Teflon or fluorocarbon resin, special grade rubber diaphragm. Okay, diaphragm coated with the polytetrahydrofluoroethylene, that is nothing but the Teflon. They are available for the steam. They are available for transportation of steam in the sterilization area. ये diaphragm. Okay, it is suitable for the fluid containing suspended solid. Fluid containing suspended solid suitable for table हो गए यहाँ पे suitable for fluid containing suspended solid. We can easily sterilize. It can be easily sterilized, or we can easily sterilize the diaphragm, and it can be used in the sterile product. इसका advantage का merits नहीं का advantage. Pressure drop is negligible. There is a very negligible change in the pressure at the wall. In complete drainage. Okay, complete drainage in the horizontal line. ये जो horizontal line रहता है उसमें अगर ये फिट किया तो complete block कर देगा. Excellent performance. Then replacement is very easy. इसका disadvantage क्या है? Demerits. So it is applicable for only approximate 340 kilopascal pressure. Pressure is the drawback. 340 kilopascal pressure है, उससे ज़्यादा अगर है तो उसमें यूज नहीं करेंगे डायफ्राम वॉल, क्योंकि डायफ्राम फट भी सकता है. Okay, so again it is expensive and high maintenance cost is there. So what is diaphragm wall? So diaphragm. So construction of diaphragm wall. You can see over here. So this is the diaphragm wall. It has a body. In that body, flexible physical barrier. Physical barrier. We can control the flow. You can control the flow by using this diaphragm. ये physical barrier कौन सा होता है? ये. It is made of rubber or rubber casted in the material. Mixed material होता है. So these are the types of wall. आपको सिर्फ याद रखना है कि types of wall को दिए. Plug and plug wall, ठीक है? Gate wall, then globe wall, then diaphragm wall. इसका थोड़ा सा description, बस बाकी कुछ नहीं. अगर क्वेश्चन आ गया तो wall और उसका थोड़ा सा description. बाकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कंस्ट्रक्शन वर्किंग इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा. आ गया तो मुझे आके जूते से मारना. तीसरा होता है क्विक ओपनिंग वॉल. लास्ट वाला आता है क्विक ओपनिंग वॉल. क्विक ओपनिंग वॉल. वी हैव सीन द गेट वॉल. ओके, इन द गेट वॉल्व जो होता है उसमें क्या है? इन द गेट वॉल्व स्टीम इज थ्रेडेड. ओके, स्टीम इज थ्रेडेड एंड रिक्वायर्स नंबर ऑफ turns to close. Requires number of turns to close. यहाँ पे डांस हो गया. Turns to close the wall. Okay, in the gate wall steam is threaded. मतलब gate wall में जो है ना, वो जो ऊपर वाला जो हैंडल है वो थ्रेड होता है उसमें. तो you have to spin that. आपको घुमाना पड़ेगा उसको, ठीक है, तब जाके wall open या close हो सकता है. Okay, so in the gate wall steam is threaded and requires number of turns to close wall. But quick opening wall have smooth steam. Okay, and operated, okay, open or closed by lever handle. So it can be open or closed by lever handle in a very simple operation. It will not require much turns. तो गेट वॉल में क्या है कि गेट वॉल में आपको टर्न्स ज्यादा करना पड़ता है, मतलब भाई घुमाना पड़ेगा गेट वॉल ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए. ओके, बट क्विक ओपनिंग वॉल, ओके, सो क्विक ओपनिंग वॉल वे हैव स्मूथ स्टीम एंड opened or closed by silver. Okay, open and closed by its lever or handle in the simple operation, but it involves a danger. It involves a danger of water hammer. मतलब क्या होगा? ड्यू टू सडन स्टॉपेज ऑफ योर फ्लो, ये जो वाल्व रहेगा यहाँ पे इन बिटवीन द पाइप, इन बिटवीन द वाल्व,
sudden stoppage of flow velocity is converted into sudden stoppage of flow because यहाँ से liquid जो है वो particular flow में आ रहा है, so it is passing, it is having with the velocity, it is having with some kind of kinetic energy. Okay, so sudden stoppage of flow in the velocity. Okay, the velocity is now converted into the pressure energy, and it is a 60 times of the velocity of fluid, which gives very intense shock. Quick shock मिलेगा, intense shock, that is known as a water hammer. Okay, ये important, ये याद रखना है. So they are used for only short line, not for long line. Now check valve क्या होता है? So they are used for unidirectional flow. Check valve, they are used for unidirectional flow. मतलब एक ही साइड पे फ्लो जा रहा है, आपको एक तो बंद करना है, चालू करना है. They are used for unidirectional flow and or for protective mechanism to prevent the reversal of flow. They are operated automatically when flow is built up in when flow of fluid is there, it will build up the pressure, and that's why it will open automatically or it will close automatically. ठीक है, इसको बोलते हैं हम चेक वाल्व. तो चेक वाल्व दे आर यूज फॉर यूनिडायरेक्शनल फ्लो. बोथ डायरेक्शन में, अगर दोनों डायरेक्शन में फ्लो चाहिए आपको, उसको बोलेंगे बाई डायरेक्शन. दोनों डायरेक्शन मतलब ये इधर भी चाहिए आपको फ्लो, ठीक है, इधर भी चाहिए, बाई डायरेक्शनल. यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही जगह, एक ही साइड में, ठीक है. सो फॉर इट इज यूज फॉर यूनिडायरेक्शनल फ्लो, for it is also used for protective mechanism to prevent the reversal of flow. It is operated by automatic mean. Okay, when there is a flow of fluid, it will develop a certain pressure at the end, and that pressure leads to opening of that valve. There are three types of valve known as swing check, then ball check and lift check. Check valve का तीन टाइप होता है, swing check, ball check and lift check. तो ये ऐसे होते हैं swing check. देखो यहाँ से अगर फ्लो कम है तो क्या होगा, ये जो है ना, ये उसको उठाना, इसको उठा नहीं पाएगा. ये अगर फ्लो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से आएगा तो ये उसको ये जो स्विंग है उसको उठा देगा यहाँ से, ऐसा होगा, फ्लो जाएगा. दे आर ऑटो ऑपरेटेड, ऑटोमेटिक ऑपरेटेड. इससे बॉल चेक ना, बॉल चेक, ठीक है. ये बॉल जैसे फ्लो ज़्यादा होगा, मतलब प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ये बॉल लिफ्ट अप हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये पूरा ओपन हो जाएगा बॉल. सो ड्यू टू प्रेशर दिस बॉल विल, ये एक मैकेनिज्म जो होता है. सो यू कैन सी दिस मैकेनिज्म इज आल्सो यूज्ड इन द वाटर टैंक्स. वाटर टैंक्स होता है टेरेस के ऊपर, उसमें ये ऊपर लगा दिया जाता है बॉल, ताकि उसके ऊपर जब ये आ जाए ना, वाटर आ जाए, तो बॉल का मूवमेंट होता है. जब टंकी भर जाए तो बॉल का मूवमेंट होता है और वो गिर जाता है. गिरने के बाद में क्या होता है, फिर वहाँ पे एक बटन रहता है, वो ऑटोमेटिकली मोटर को बंद कर देगा. बॉल चेक. देन लिफ्ट चेक इज आल्सो देयर. लिफ्ट चेक विल लुक लाइक दिस. यहाँ पे आपको ज्यादा लोड लेना ही नहीं है उसका, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ वाल्व उसका डिस्क्रिप्शन में भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता. सो कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक वाल्व्स ऑफ थ्री टाइप: स्विंग चेक, बॉल चेक एंड लिफ्ट चेक. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पंप? पंप क्या होता है? सो पंप इज यूज्ड टू इंक्रीज द प्रेशर एनर्जी of the liquid. What is the pump? What is the role of pump? So it is the device, it is a mechanical device which is used to increase the pressure. Okay, so if you want to transport a liquid from lower height to the higher height, so for that you need to build up the pressure. Okay, so for that you are using pump. So pump is used to increase the pressure energy of liquid. Now classification of pump. There are three types of pump. First one is a reciprocating pump. उसके example देखो, reciprocating pump. In that piston pump is there, plunger pump is there, and diaphragm pump is there. Question इसके ऊपर आता है. One of the following is not type of reciprocating pump. या फिर following are the type of reciprocating pump except. Okay? या फिर match the following type of pump with their example. Okay? So reciprocating pump, in that you have piston pump, plunger pump and diaphragm pump. Now rotary pump तो easily याद होता है. Rotary pump मतलब कुछ ना कुछ rotate हो रहा है उसमें. So this type of pump will have some kind of element which has a rotation. So centrifugal pumps, that you have centrifugal pumps and gear pumps. So both involves the some kind of rotation. Okay? So reciprocating मतलब
आगे पीछे आगे पीछे। सो आगे पीछे होने वाले पंप पिस्टन पंप होता है, प्लंजर पंप होता है, डायफ्राम पंप. So rotary pump is there is a complete rotation. So centrifugal pumps, gear pumps, they are the rotary pump. Miscellaneous pumps in that you have peristaltic pump. So they can ask question on this. एक बार question आ भी चुका है इसका. Types of or classification of pump. Pumps are devices to increase the pressure energy, okay, of liquid. Classification of pump. Pump क्यों करना है आपको? For example, I have told you. Suppose from one, अगर आपका जो मैन्युफैक्चरिंग विसल है सिरप सस्पेंशन का, वो सेकंड फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे है और आपका पैकिंग नीचे है, तो इट्स ओके, मतलब ग्रेविटी से भी आप उसको भर सकते हो. बट सपोज योर production area is at ground level and your packing area is on a second floor, so at that time you have to pump out that whatever solution you have made, whatever syrup you have made. So for that you need a pump. So right type of pump. Okay, so suitability of pump will be based upon the your requirement, energy requirement, then type of material to be transported, etc., etc. So there are three type of pump. Remember, reciprocating pump. Reciprocating pump में आता है आपको piston pump, plunger pump and diaphragm pump. ये तीनों याद रखो. Rotary pump में आता है centrifugal pumps and gear pumps, and last में आता है miscellaneous peristaltic pump. In the reciprocating pump you have different types. Okay. In the piston pump also you have different type. So single piston, double piston, single acting, double acting. Okay. So we are going to see that. Pumps or pump is nothing but the mechanical devices to increase the pressure energy of liquid, and which is used to rise the fluid from lower to higher level. Lower to higher level. If you want to rise the liquid from lower to higher level, you have to use pump, because that is against the gravity. You need to apply some kind of force. That force is applied by pumps. So it is a pressure energy. You can see it is a part of mechanical engineering. Okay. Now reciprocating pumps. Okay, reciprocating pumps. So in that we already seen the classification. Piston pump is there, plunger pump is there, and diaphragm is there. Diaphragm pump is there. Then next होता है आपका rotary pump. In that centrifugal pump is there and gear pump is there, right? Centrifugal pump, gear pump. Right? Now third is there miscellaneous. So in that you have peristaltic pump. First is nothing but the reciprocating pump. Reciprocating pump क्या होता है? So in this pump, the pumping element means the element which takes a liquid, which sucks a liquid or which throws a liquid. Okay? You know, reciprocating pump, the pumping element moves forward and backward. Pumping element will move forward and backward in the cylinder. cylinder मतलब एक space रहेगा आपका. Pumping elements, यहाँ पे कोई pumping elements रहेगा. So this will move forward or backward. Okay. So the pumping element in the reciprocating pump move forward and backward. ये दो या word याद रखो, forward and backward. If only forward and backward is there, so in any pump, so it is a reciprocating pump. Forward backward movement है बस reciprocating pump है. So in the cylinder, most of the time these kind of pumps are used for the pumping the water, and that's why the cylinder is known as a water cylinder. Now simple reciprocating pump. Okay. In the simple reciprocating pump, pumping element moves forward. Okay, moves forward. That is known as a downstroke. ये से forward move होगा तो उसको बोलेंगे downstroke. Downstroke to push the liquid out as a discharge. That is the output. Later it goes back. Okay, it recedes. So at the time it will suck the liquid. ठीक है, जब आगे ढकेल देगा तो लिक्विड को पुश कर देगा, जब पीछे जाएगा तो लिक्विड सक हो जाएगा. इट विल ड्रॉ द लिक्विड फ्रॉम द सोर्स, दैट इज इनपुट. पंपिंग एलिमेंट is either piston or plunger. Pumping element will be either piston. Suppose this one is a piston. This one is piston. And, okay, it may be either piston or plunger. So reciprocating pump में basically क्या होता है? इसमें एक element रहता है, pumping element. So that pumping element will move forward and backward. Okay, in the cylinder. एक cylinder मतलब एक body रहेगा ऐसा, water cylinder बोले उसको. So in that you have some element, either it may be piston or it may be either plunger. Okay, so it will move forward. When it will move forward, तो इसमें suppose कीजिए इसमें water है,
When it will move forward, it will propel the water out, okay, known as a outward movement, known as a forward. So that is known as a downstroke or delivery stroke. To push the liquid out as a discharge, that is output. Okay, later जब ये वापस जाएगा, जैसे ये यहाँ तक फॉरवर्ड आ गया, it will push the liquid. When it will go back at its original position, so it will when it will recedes, it will cause suction. So it will suck the liquid. It will draw the liquid as input. Okay? Pumping element in this reciprocating pump may be either piston or plunger. Piston भी हो सकता है, plunger भी हो सकता है इसमें, ठीक है. So depending on that, piston pumps are there. They are further classified. Then plunger pumps are there. They are also further classified, right? So reciprocating pump is a positive acting type of pump. That is a displacement type of pump. Reciprocating pump क्या है? It is a positive acting type pump. Also, it is a displacement pump. It creates a pressure. A reciprocating pump क्या करता है? It creates a pressure and lifts up the liquid. Pressure create करता है, उसकी वजह से liquid को ढकेलती, lifts up the liquid by displacement type of moving element. Displacement type of element. That's why it is known as a displacement pump. Reciprocating pump is a displacement pump because ये displace करता है, ठीक है, सक करता है, वाटर को सक करेगा, प्रेशर ढकेल देगा आगे. डिस्प्लेसमेंट. सो इट इज यूज्ड फॉर द बॉयलर, ओके, टू फीड द वाटर. बॉयलर में वाटर फीड करना है आपको, तो उस टाइम पे ये रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज किया जाता है. इसमें टाइप्स होता है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स इन द रेसिप्रोकेटिंग पंप. फर्स्ट वन इज स्टीम रेसिप्रोकेटिंग पंप. स्टीम रेसिप्रोकेटिंग पंप. सो स्टीम सिलेंडर इंस्टेड ऑफ वाटर सिलेंडर, यहाँ क्या रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, स्टीम सिलेंडर. Steam cylinder contain is system directly connected with the piston. मतलब ओके, ये रेसिप्रोकेटिंग पंप है ना, तो ये जो भी पंपिंग एलिमेंट है, इट में भी आइदर पिस्टन और प्लंजर, तो उसको फॉरवर्ड करने के लिए, बैकवर्ड करने के लिए कुछ ना कुछ लगेगा ना. सो दैट्स व्हाई स्टीम रेसिप्रोकेटिंग पंप मींस they are operated by the steam. Okay, their plunging element moves forward and backward with the help of steam. So that's why steam reciprocating pumps, they are connected with the steam cylinder also. Okay, देखो reciprocating pump में क्या होता है, ये pumping element होगा, एक सिलेंडर, मतलब सिलेंडर मतलब एक बॉडी केस रहेगा, उसमें वाटर रहेगा, मान लीजिए वाटर सिलेंडर. सो इट विल मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. इट में भी आइदर पिस्टन रहेगा उसमें या फिर प्लंजर रहेगा. सो फॉर दैट मूवमेंट, वो मूवमेंट कैसे करेंगे आप, एक तो स्टीम सिलेंडर से मूवमेंट दे सकते हो उसको, या फिर आप मोटर से मूवमेंट दे सकते हो, या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी से. सो स्टीम रेसिप्रोकेटिंग पंप. स्टीम रेसिप्रोकेटिंग पंप. सो स्टीम सिलेंडर कंटेन steam directly, so it is connected with the steam cylinder. That steam cylinder is connected directly with the piston or rod. जो भी piston rod है या फिर piston है या rod है, so at that steam cylinder is attached of the water cylinder. मतलब ये piston तो water cylinder में रहेगा, so piston will be in the water cylinder, but to move that piston or rod, so steam cylinder is attached to that. That is a steam reciprocating pump. Okay, it is the most common type of, okay, it is the most common type, and maybe either one steam, it may be either having one steam cylinder, उसको बोलेंगे simplex. It may have two cylinder having each separate piston, duplex pump. So steam reciprocating pump may be either simplex or duplex. Simplex मतलब एक ही steam cylinder होगा, एक ही water cylinder होगा. Duplex मतलब दो steam cylinder होंगे, ठीक है, दो steam cylinder होंगे. So steam reciprocating pump. Another type of reciprocating pump is a power reciprocating pump. इसमें क्या है कि power is used to move the piston. For example, इलेक्ट्रिक मोटर से उसका पिस्टन का मूवमेंट करेंगे. So that is nothing but the power reciprocating pump. Power is used to move the piston. Example, electric motor. Okay, so electric motor rotation, that is attached with the crankshaft. तो उसका shaft usually through gears or by built from the line shaft using electric motor. तो ये जो पिस्टन का मूवमेंट होगा या फिर आपका प्लंगर का मूवमेंट होगा, वो कौन करेगा, मोटर करेगा. दैट इज बाय सप्लाइड बाय पावर रेसिप्रोकेटिंग. So basically reciprocating pumps, there are two types.
So steam reciprocating pump and power reciprocating. Now in reciprocating pumps, depending upon the type of pumping element. Pumping element कौन सा है? If it is a piston, so they are known as a piston pump. Piston pumps are also classified into different types. If that pumping element is a plunger, so known as a plunger pumps, they are also classified in a different types. We'll see it. So classification of piston pump. Piston pump का classification देखो. ये क्या है? It is a reciprocating pump. It is a type of reciprocating pump. आपको क्वेश्चन आता है. Piston pump is a type of reciprocating pump. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी आपको आएगा गियर. ऑप्शन बी आपको आएगा सेंट्रीफ्यूगल पंप. ऑप्शन सी आएगा पेरिस्टाल्टिक पंप. याद रखो पिस्टन पंप, जितने भी पिस्टन पंप रहेंगे उसमें सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेट्स जो भी आएगा वो सब क्या है? रेसिप्रोकेटिंग पंप है. So depending on the number of cylinder, if number of water cylinder, okay. So if it is a one, it is known as a simplex pump. If water cylinders are two, known as a duplex. ठीक है, duplex. If three, triplex piston pump. कैसे ये piston driven कौन करता है? Who will drive the movement? Who will drive that piston? So who will affect the movement of piston? Depending on that. So in this simplex single acting piston pump. सिंप्लेक्स सिंगल एक्टिंग पिस्टन, मतलब ये पिस्टन क्या है? एक तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक ही मूवमेंट होगा उसका. सिंप्लेक्स डबल एक्टिंग पिस्टन पंप, एक ही जब मूवमेंट हो रहा है उस टाइम पे ये इन भी करेगा एंड आउट भी करेगा लिक्विड. सिंप्लेक्स डबल एक्टिंग पिस्टन पंप मतलब क्या है कि एक जब एक मूवमेंट होगा फॉरवर्ड मूवमेंट में, तो उसमें हाफ हाफ जो मूवमेंट है उसमें उसमें आउट करेगा और हाफ जो मूवमेंट है उसमें इन करेगा. ओके, एक फॉरवर्ड. जब बैकवर्ड भी मूवमेंट होगा, सो जो हाफ ऑफ इट्स मूवमेंट उसमें एक लिक्विड सक करेगा, हाफ मूवमेंट में पुश करेगा. सो सक एंड पुश. तो एक जो मूवमेंट हो रहा है उसमें हाफ में सक कर रहा है लिक्विड, इसमें हाफ में पुश कर रहा है. एंड दूसरा जो बैकवर्ड मूवमेंट हो रहा है उसमें भी हाफ में सक कर रहा है, हाफ में पुश कर रहा है. सो डबल एक्टिंग based upon the value used depend upon the valve used. Sorry, valve कौन सा है उसमें? तो simplex single acting deck valve. When pressure is low, when low pressure is required, deck valve is used. So simplex single acting deck valve piston pump, simplex double acting port valve piston pump. So ये piston pump का एक उसका क्लासिफिकेशन है. Reciprocating pumps, there are two types. Okay, so first one is a piston pump. So piston reciprocation मतलब क्या? To move forward and backward. Piston reciprocate in an enclosed water cylinder. Piston packing material is also used. When piston will move, packing material will also be carried with the piston. So there are different types of piston pumps. Simplex means having one cylinder. Okay, simplex means a pump having one water cylinder and piston rod is joined with, so one water cylinder having piston. Okay, piston rod. Simplex. Duplex means two water cylinder, where triplex means three water cylinder. Piston rod are joined separately. Duplex है तो दो piston रहेगा उसमें अलग अलग joined separately. Triplet है मतलब तीन water cylinder उसमें तीन piston, they are joined separately. Piston pumps are also further simplex, duplex or triplex depending upon the number of water cylinders. In the duplex type, two water cylinders are arranged separately side by side. मतलब क्या यहाँ पे duplex में क्या रहेगा? Two water cylinder, मतलब इधर एक water cylinder and इधर एक water cylinder, they are joined. उसमें यहाँ से एक piston pump रहेगा, यहाँ से एक piston रहेगा. So I will show you diagram tutorial. In the duplex type, two water cylinders are arranged separately side by side in the same frame. Piston rods are connected separately to the two steam cylinder. क्योंकि उसको ड्रिवन करना है ना, आपको पिस्टन को मूवमेंट देना है, इधर मोटर से दे सकते हो आप या फिर क्या स्टीम से दे सकते हो. So in this duplex type, two water cylinder are used arranged separately side by side and okay in the same frame. Pistons rod are connected separately to the two steam cylinders which are also arranged side by side. Okay,
at the stem end. Now each cylinder may either single acting or double acting. अब ये जो है इसमें जो सिलेंडर है इट में भी आइदर सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग. सिंगल एक्टिंग क्या होता है? सिंगल एक्टिंग पिस्टन पंप, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. डबल एक्टिंग पिस्टन पंप, सिंगल एक्टिंग पिस्टन पंप. ठीक है, एक ही बार क्वेश्चन आ चुका है लेकिन पिस्टन पंप के ऊपर ही क्वेश्चन आ चुका है. सिंगल एक्टिंग पिस्टन पंप. सो ओके, सिंगल एक्टिंग पिस्टन पंप. So it will display or it will push or display or displace. Okay, actually displace होता है. It will displace the water on half of this cycle. ठीक है, सिंगल एक्टिंग मतलब हाफ साइकिल में ये डिस्प्लेस करेगा वाटर, मतलब पुश करेगा, मतलब फ्लो इफेक्ट होगा, मतलब आगे ढकेल देगा. सो इट विल डिस्प्लेस द वाटर ऑन अ हाफ ऑफ दिस साइकिल द पिस्टन मूवमेंट. ओके, usually during the down stroke. During the other half cycle, that is a backward stroke, the cylinder will be filled with the fluid. The pump will require many more than two valves. Pump requires more than two valves. One valve will receive the liquid in the cylinder and second valve is required to pump the liquid out of the cylinder. इसका एक लिमिटेड कैपेसिटी होता है एंड डिस्चार्ज इज पल्सेटेड. सो सिंगल एक्टिंग पिस्टन पंप मतलब क्या है? इसमें इसमें एक ही पिस्टन होगा, वह सिंगल एक्टिंग पिस्टन पंप. सो ओनली वन वाटर सिलेंडर होगा एंड इट विल डिस्प्लेस वाटर ऑन वन हाफ ऑफ द साइकिल ऑफ पिस्टन मूवमेंट. जब फॉरवर्ड करेगा, ओके, जैसे ये यहाँ पे व्हेन इट विल मूव फॉरवर्ड, सो देयर इज नोन एज अ stroke. Okay, there is no stroke, forward stroke. At that time water will be expelled, water will be displaced, and when it will go backward stroke, at that time water will be entering into the that water cylinder. यहाँ पे दो वाल्व्स रहेंगे, एक इनलेट के लिए रहेगा, आउटलेट के लिए रहेगा. so when it will move forward, ये क्लोज हो रहेगा, तो water will go out from the cylinder. It will go backward, so water will enter into the cylinder. So that is nothing but the single acting piston. Are you getting or not? समझ रहे हैं आपको? ये क्या है, ऑपरेशन बहुत इजी होता है, समझने में थोड़ा सा कठिन होता है. It has a limited capacity and the flow you are going to get pulsated flow मतलब क्या? जैसे मैंने बोला है, सब आपका अगर वेन कट गया, ठीक है, कट हो गया आपके वेन को, तो जो फ्लो आता है ना आपका ब्लड का, तो वो ऐसा कंटिन्यूस नहीं आता है. देयर इज नो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ब्लड एंड देयर इज अ कट टू वेन. देयर इज अ पल्सेटाइल फ्लो. जब हार्ट का सिस्टोल होगा तो ज्यादा ब्लड बाहर आएगा, जब डायस्टोल होगा तो कम आएगा, मतलब पल्स. ठीक है, पल्सेटाइल फ्लो. इन दिस सिंगल एक्टिंग पंप आल्सो द फ्लो डिस्चार्ज इज नथिंग बट द पल्सेटाइल. नाउ डबल एक्टिंग पिस्टन पंप, क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर. डबल एक्टिंग पिस्टन पंप, जीपैट में क्वेश्चन आ चुका है. डबल एक्टिंग पिस्टन पंप. What is that double acting piston pump? It displaces the water on both half of the cycle, both halves of the cycle, and it requires minimum four valves. Two valves for pumping liquid out and two valves for receiving the fluid in the cylinder. Several valves that can be used in order to pump the discharge at a higher rate. मतलब several valves they can be connected to increase the discharge rate at a high velocity and more volume of water during one half of the stroke. डबल एक्टिंग पिस्टन. तो क्वेश्चन पूछा था कि minimum four valves, okay, a pump which displaces the water on the both half of the cycle of the piston and requires minimum four valves. It is a double acting pump. सिंगल एक्टिंग पंप में क्या रहेगा, इसमें वाल्व्स कितने रहेंगे? दो ही रहेंगे, इनलेट एंड आउटलेट. ठीक है, बट इसमें चार रहेंगे, टू फॉर इनलेट, टू फॉर आउटलेट. डबल एक्टिंग पिस्टन पंप मींस एट द हाफ ऑफ साइकिल it will discharge, at the half of cycle it will suck. तो suck के लिए दो वाल्व और push के लिए दो वाल्व. डबल एक्टिंग पिस्टन पंप. Depending on the valve used, type of valve, deck valve is used for low pressure and the flow should be if desired flow is unidirectional. Then pot valve is used
फॉर हायर प्रेशर, वो अलग अलग मटेरियल से बनते हैं. Now you can see the construction of simplex double acting stream driven stream मतलब यहाँ पे steam cylinder रहेगा, stream driven deck valve कौन सा है, deck valve piston pump constitution of simplex double acting ठीक है. double acting मतलब there are four valve, so valve E1 for the suction. So during the half of its movement, it will suck the water and it will suck the water. Double acting means it has a four valve, two valve for inlet, that is nothing but the for suction. This is known as a water cylinder. ये जो पूरा square है, that is a water cylinder. Okay. So two valve for liquid pen. The pump जैसे होता है, ये pump का पूरा movement जब होगा, मतलब ये जो piston है, so you can see the piston over. So piston. Suppose piston यहाँ तक आया and it is going back. तो यहाँ तक आने के बाद में ये जो वॉल है ये ओपन हो जाएगा, यहाँ से लिक्विड वाटर अंदर आ जाएगा. जब वो वॉल वही जब यहाँ तक जाएगा ये वॉल भी ओपन हो जाएगा and there will be inlet of liquid in this water cylinder. Okay. When this is the half movement, one full movement क्या होगा, एक बार पीछे जाना एक बार आगे आना, तो उसको बोलेंगे full movement. So once this piston should go forward and backward, that is a one complete cycle. Now half cycle means it will just go forward, okay, that is half cycle, or it will go just backward, that is half cycle. During half cycle, so two valves will inlet the water in this cylinder, and during the rest of the half cycle, this valve will be closed and it will push the water through these valves. Double acting piston pump. एक जब ठीक है, जब बैकवर्ड मूवमेंट होता है, जब सकिंग होता है, उस टाइम पे दो वाल्व्स ओपन होंगे और लिक्विड फिलअप करेंगे वाटर सिलिंडर में. एंड जब फॉरवर्ड मूवमेंट होगा तो ये वाल्व क्लोज होके ये वाल्व ओपन होंगे और यहाँ से थोड़ा जब तक यहाँ पे आ रहा है तो वाटर यहाँ से जाएगा, पूरा यहाँ से आएगा तो वाटर यहाँ से जाएगा. सो दैट्स व्हाई इट रिक्वायर्स अ फोर वाल्व, टू फॉर inlet of liquid and two for outlet of liquid. Okay. That's why it is known as double acting piston pump. Question इसके ऊपर आ चुका. Now plunger pumps. There are second type of pump is nothing but plunger. Plunger is a reciprocating element. Piston में क्या था, piston pump में piston was the reciprocating element. Plunger is reciprocating. Plunger is reciprocating in the enclosed water cylinder. Plunger will move. Okay. Plunger will move past on the stationary packing. Plunger moves past on the stationary packaging, suitable for the handling of liquid at high pressure. Also used for the viscous liquid. Plunger pumps, right? Now, इसमें भी simplex, duplex and triplex होता है. Simplex means having one cylinder where plunger rod attached via shaft. Okay. Duplex and triplex means two cylinder and three cylinder respectively water cylinder. if cylinder बोल रहे तो water cylinder, then they are attached to a crankshaft. Okay, they are attached to a crankshaft separately. Simple acting जैसे डबल एक्टिंग पिस्टन पंप था, सिंगल एक्टिंग पिस्टन पंप था, वैसे ये प्लंजर, बस पिस्टन जो है वो रिप्लेस करना है प्लंजर से, जस्ट बाकी तो सेम ही रहेगा. जस्ट हैव टू रिप्लेस द प्लंजर with the piston. Okay. So you just have to replace the piston with the plunger. So in case of plunger pump. Next होता है आपका diaphragm pump. Diaphragm pump. So it is a type of reciprocating pump again. Okay. Two parts are separated by flexible diaphragm with the flap of discharge valve at a center. वहाँ पे क्या flap रहेगा, मतलब झड़प रहेगी at the center of valve. Okay. And suction valve at the bottom. Discharge valve रहेगा ऊपर, suction valve रहेगा bottom में. The material like rubber, metal or plastic. Diaphragm pumps. इसका diagram होता है, used for transportation of liquid containing solid and also used for the hazardous, toxic and carcinogenic chemicals. Diaphragm. Plunger pumps, they are classified into different types depending on the number of cylinder. Plunger pumps. Okay. Plunger, the reciprocating element will be plunger. Simplex plunger pumps having one cylinder. Duplex means having two water cylinder. Triplex means having three water cylinder. Based upon the placement and packing material. Simplex inside the
इसमें दो टाइप आता है, इनसाइड पैक्ड एंड आउटसाइड पैक्ड। सिंपल इनसाइड पैक्ड प्लंजर पंप्स, simplex outside packed plunger pumps. Method of packing of material fixed to center. तो simplex outside center packed मतलब ये जो है ना पैकिंग, पैकिंग भी दो टाइप का होता है, इसे बोला इनसाइड पैक्ड आउटसाइड पैक्ड। तो इनसाइड में भी दो टाइप का होता है, सेंटर पैक्ड एंड एंड पैक्ड। सो simplex outside center packed and packed plunger pump, simplex outside end packed plunger pump। इतना डीप में क्लासिफिकेशन नहीं पूछेंगे आपको, वो सिर्फ एक बार क्वेश्चन आया था डबल एक्टिंग पिस्टन पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, पेरिस्टाल्टिक पंप, ये इसके ही ऊपर क्वेश्चन थे। ठीक है, सो यू कैन सी द प्लंजर, यहाँ पे एक प्लंजर रहेगा, प्लंजर मतलब ये पिस्टन के, ये पिस्टन के अलग प्लंजर रहता है, प्लंजर मतलब ये, दिस इज द प्लंजर कनेक्टेड विद द क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट मतलब मोटर का शाफ्ट जो रहता है उसके ऊपर कनेक्ट रहता है। So again, construction of duplex outside end packed plunger pump, outside end packed plunger pump। यहाँ पे देखो पार्टीशन है, इट इज डबल एक्टिंग है, डुप्लेक्स है मतलब डबल एक्टिंग। यहाँ पे ये जो पार्टीशन है, यहाँ पे एक वाटर सिलेंडर है, यहाँ पे एक वाटर सिलेंडर ए एंड वाटर सिलेंडर बी, एंड दिस प्लंजर then it will move forward and backward। So when it will move forward and backward, so at that time, at a single moment, at the half of its movement, there will be sucking of water in the water cylinder, and at the rest of the half movement, there is a discharge of that water through discharge valves। So again, it is a plunger pump, बस इसमें plunger रहेगा, पहले इसमें क्या था, piston था, that's it। Now this is the construction of diaphragm valve, diaphragm pump, construction of diaphragm pump। This is a water cylinder or liquid chamber. At the bottom, suction valve is there, and flexible diaphragm is there. Okay, and then outlet, liquid outlet. So corrosive type liquids they are handled by this diaphragm pump, diaphragm pump। बस यहाँ पे diaphragm रहेगा। Now आप बोलेंगे सर यहाँ पे movement कैसे होगा? So it is attached vertically with the air chamber, when this air chamber, when air will be blown, so ये diaphragm क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। So there will be decrease in the space in the water cylinder। Okay, and when there will be blown removal of air, so it will suck the water in this inlet। जब diaphragm नीचे आएगा तो because of the air pressure which is here from here, air pressure यहाँ से आएगा तो ये diaphragm जो है ना वो नीचे आएगा, ठीक है, नीचे आएगा। एंड व्हेन वो एयर सप्लाई कम हो जाएगा या फिर रिमूव किया जाएगा, तो इट विल अगेन मूव अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो लाइकवाइज जैसे पिस्टन आगे पीछे घूम रहा था, प्लंजर आगे पीछे घूम रहा था, वैसे ही ये जो है डायफ्राम ये ऊपर नीचे घूमता है, ऊपर नीचे घुमाने के लिए इसको एयर सप्लाई होता है। So this air supply, because of this air supply, when air supply is there, so this diaphragm will move to the downward direction, okay? And when air supply is removed, this diaphragm will move to upward direction। Now when this diaphragm will move upward direction to its original place, at that time during their movement there is a suction, and due to that suction there is a water will be sucked into this, okay, and it will be out, this is the outlet, this is the construction of this diaphragm pump। Rotary pumps, second type होता है rotary pumps। We have seen the three classes। In the rotary pump, liquid is transported based upon the mechanism of rotation। यहाँ पे क्या है, rotation mechanism। So all the rotary pump will have one or more element within the stationary casing which is capable of rotation। Liquid is transported based upon mechanism of rotation of the one of the element। यहाँ पे एक element होगा जो rotate होगा, it may be either centrifugal pump, centrifugal element, या फिर it may be either gear होगा। So for example जैसे होता है, you might have seen, आपको मालूम नहीं मुझे कि आपके टाइम पे था या नहीं, क्योंकि आप अभी when we was in a schools, so at the time जो किराना दुकान था, मतलब किराना का जो ग्रोसरी जो दुकान था, उसमें आजकल क्या है कि अभी सब पैकिंग का
ऑयल आ रहा है, पैकिंग पैक्ड ऑयल, सो यू आर गेटिंग अ सोयाबीन ऑयल पाउच, यू आर गेटिंग अ सोयाबीन ऑयल कैन। तो पहले ये सब नहीं था, पहले क्या था कि जो जहाँ पे भी जो रिटेल किराना वाला है वो वो पूरा एक ड्रम लाता था ऑयल का, पूरा एक बैरल, वो ड्रम लाके उसमें का ऑयल निकलता था रिटेल सेल के लिए। कैसे निकलेगा, उसके पास एक पंप होता था, वो पंप था गियर पंप, वो उसको घुमाता था और उसमें से ऑयल बाहर आता था। So rotary pump, gear pump is one of the example of rotary pump. So it will have either one rotating element. So in that you have positive displacement pump. In that you have positive displacement pump. One. In the rotary pump, first is a positive displacement pump. Liquid is displaced mechanically by rotation. Rotation. That is nothing but pressure of the one of the element within the stationary housing. तो एक पंप है जिसमें स्टेशनरी हाउसिंग रहेगा ऐसा, एंड वहाँ पे एक कुछ ऐसा मूव रोटेशन के लिए ऐसा रहेगा एलिमेंट। सो इट विल बी सप्लाइड, जब आप उसको रोटेट करोगे तो ड्यूरिंग द रोटेशन इट विल सक द लिक्विड फ्रॉम वन एंड it will supply liquid to another end. So positive displacement pump. Liquid will be displaced mechanically by the rotation means there is a pressure of the one of the element within the stationary housing. सेकंड होता है गियर पंप, एग्जांपल इसका होता है गियर पंप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का एग्जांपल होता है गियर पंप। गियर पंप इज आल्सो नोन एज अ साइक्लोइडल पंप। दिस गियर पंप जो होता है ना, वो आपने देखा किराना वाला जो होता है जो बैरल से ऑयल लाता है, तो उसको ऑयल के लिए वो बैरल में से निकालने के लिए गियर पंप यूज, दैट इज अ मैकेनिकली ड्रिवन, हाथ से घुमाता है उसको गियर पंप। इट इज आल्सो नोन एज अ साइक्लोइडल पंप, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सक्शन क्रिएटेड बाय टू डिफरेंट गियर्स meshed together. तो दो गियर्स है एक में के साथ में रहते हैं वो अंदर, and rotation result in the rotation, they are rotated externally, okay, and due to that rotation it creates a suction within the pump, which because of that suction liquid is sucked into the pump, and after that it is thrown out of the pump. So it is used for the viscous liquid. Question इसके ऊपर आ सकता है, gear pump is used for viscous liquids and semi solids. Viscous liquid like oils, तो oils आपका जो edible oils, animal oils, जितने भी oils है, for that gear pump is used, and it is a mechanically driven. Nowadays it is a motorized also. Then centrifugal pump. So in the rotary pump, another second type is a centrifugal pump. पहला क्या था, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, उसमें एग्जांपल था गियर पंप, सेंट्रल सेंट्रीफ्यूगल पंप। So because of the rotation of blades or impeller, because of the rotation of blades or impeller in the pump, so suction pressure is produced at the center of pump. Suction pressure is produced at the center of pump due to rotation of blades and impeller. Okay, and this causes the suction of liquid into the pump. इसका ये, okay, centrifugal pump produces the kinetic energy, and then that kinetic energy is converted to partially to the pressure energy, effectively reducing the velocity of liquid. Pump is used at a high pressure. The liquid is pumped out at a high pressure and then it is transported. In case of centrifugal pumps, centrifugal pumps can be classified into different depending upon the type of casing. ये किसके केसिंग कैसा है, इसका बॉडी कैसा है, वॉल्यूट पंप, वॉल्यूट अगर बॉडी है तो वॉल्यूट पंप, टर्बाइन पंप मतलब मूवमेंट उसमें ज़्यादा है। ड्रिवन मैकेनिज्म, सिंगल स्टेज वॉल्यूट पंप, मल्टी स्टेज वॉल्यूट पंप, बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ इम्पेलर, इम्पेलर कौन सा है, किस टाइप का है। सिंगल स्टेज ओपन इम्पेलर वॉल्यूट पंप, सिंगल स्टेज क्लोज्ड इम्पेलर, ओके, उसमें भी सिंगल सक्शन डबल सक्शन होता है। सिंगल स्टेज ओपन इम्पेलर सिंगल सक्शन, सिंगल स्टेज ओपन इम्पेलर डबल सक्शन वॉल्यूट पंप। पिस्टन पंप के ऊपर मैंने जो बोला एक क्वेश्चन आया, सिंगल एक्टिंग पिस्टन पंप मतलब displaces the water on a half of the cycle or piston movement during the down stroke, and during other the half cycle, that is a backward stroke, it will receive the fluid. डबल एक्टिंग मतलब क्या, GPAT 2019 में आती है। So displaces the fluid on the both halves of cycle. Such pumps requires minimum 4 valves, 2 valves for suction and 2 valves for suction, or to receive the fluid, and 2 valves for
pumping out the liquid. Already देखा है piston pumps are extensively used for the spray system in the sugar coating and film coating operation of tablet. Piston pumps किसमें use किया जाता है largely? So it is used in the spray system, spraying of coating solution in the tablet sugar coating. Plunger pumps, plunger reciprocate in the enclosed cylinder depending upon the number of valves present. They are either simplex. Depending upon the number of cylinders present, they are either simplex, duplex, or duplex. We have seen that. Rotary positive displacement. लास्ट जो 2 years पहले जो था उसमें सिर्फ जो एक पहला स्लाइड था वो स्लाइड था और ये स्लाइड था, मतलब वो पूरा ट्रांसपोर्टेशन फ्लूइड मैंने 10 मिनट में फिनिश किया था, तो आपके लिए मैं पूरा 1 hour दे रहा हूँ. दैट इज द डिफरेंस. वो डिफरेंस है. रोटरी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप मतलब क्या? रोटरी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप in which liquid is mechanically displaced by rotation of one or more element within the stationary. उसका एक एग्जांपल था गियर पंप. गियर पंप का स्टॉप essentially two circular gears. दो gears रहेंगे. They are meshed with each other. The space between the teeth of each gear, okay, causes the suction. Okay, opening the liquid, it caught between that, and they are carried to a casting or ditch. तो दिखाता हूँ मैं आपको एक गियर पंप से. used for highly viscous and heavy liquids. Okay, 3 स्लाइड था. पहला वाला एक क्लासिफिकेशन का स्लाइड था, वर्ल्स क्लासिफिकेशन. बाद में दूसरा जो अपने प्रीवियस स्लाइड हो और ये एक स्लाइड. 3 स्लाइड में लास्ट टाइम ये दिया था मैंने. ठीक है, अभी तो पूरा इंफॉर्मेशन आपको बहुत कलेक्ट करके दिया. So used for the highly viscous liquid such as a vegetable oil, almond oil, or oil polychaise oil, and processing of semi-solids. Centrifugal pump, in these blades or impellers rotate which causes the reduction in the pressure and which is produced at the center of pump which draw the liquid into pump. Peristaltic pump मतलब silicone rubber and other suitable plastic tubing is clamped in a unit positioned against a rotating mechanical device. Peristaltic pump. I will show you in the book also.